A very good morning to all of you. This is Abhilasha from Layal Public School, and students, today we all are going to start our new chapter from your history textbook. The name of the chapter is The Making of the National Movement 1870s to 1947. The Making of the National Movement, the Rise of Nationalism in India. So class, the 19th century witnessed the rise and growth of nationalism in India. We have seen so many incidents. We all are going to study so many incidents which witnessed in the 19th century and which helps in the rise and growth of nationalism in India. The socio-religious awakening, the spread of modern education, the growth of press, development of means of communication, economic exploitation of our resources by the Britishers, and how Britishers conquest our territories, take over the kingdoms, and which led to an awareness about the true nature and role of British in India. These were like some of the things which Britishers did, and we get to know more about them with the with the various things which they had done to us. Okay, like introduction of new laws and administrative institution. They introduced laws according to their according to according to their selfish motives. They how the lives of peasants and tribals change after the establishment of new laws and administrative institutions. Even we will talk about why there is an urgent need felt to unite together and fight for the pride of the nation. We will talk about it also. So the concepts of nationhood and national consciousness filled the minds of the people. The now after 1870, especially after 1857, and from 1870 onwards, the Indians strongly began to feel that India was for the Indians and it was to be ruled by the Indians, not by any foreign power. Okay, so now just look at this picture which is given in your book. Police tear gas demonstration during the Quit India movement. We will talk about Quit India movement. This was like one of the last movements for getting independence. We will talk about it कि क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट और क्या क्या पढ़ेंगे हम. बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ने वाले हैं. तो हाउ जो पुलिस है वो कैसे जो नेशनलिस्ट थे उनको हटाने की कोशिश कर रही थी with the help of tear gas. Okay, with the help of tear gas. Okay, so now the emergence of nationalism. The above mentioned development led the people to ask a crucial question. What type of developments? Developments which we have studied in the previous chapters, developments by the British East India Company. Okay, so all these things, how they conquer the territories, how they introduce new laws, how the lives of peasants and tribals change, educational changes, and debates regarding the condition of women, challenges to the caste system, social and religious reforms, revolt of 1857, growth of industries, etc. So some of quite pretty development for India, but the crucial question here is, what is this country of India and for whom is it meant? I told you, like, there is an urgent need. There was an urgent need to unite together and fight for the pride of the nation, and the feeling of nationhood and the national consciousness
how the feeling of nationhood and national consciousness filled the minds of the people. Now, why Indians strongly began to feel that India was for the Indians and not for not for the foreign power. So the answer that gradually emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender. And the country, its resources and systems were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians. Now, before starting this topic, before explaining this topic, I would like to tell you the meaning of nationalism. So, anybody is here who wants me to tell me the meaning of nationalism? What is nationalism? What is nationalism? Anybody? Nationalism, no one. What is this feeling of nationalism? Yes, Kushagra. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Yes, Kushagra. What is nationalism, beta? Nationalism, I think it is related to nationality. Nationality. Okay. Yes, Anything else? ma'am, to just cooperate in the work of your country as a citizen. Okay. Okay, not the perfect definition or meaning, but okay. Yes, Jayantika. Ma'am, according to me, I think so nationalism is being obedient towards the nation Obliging and towards the being nation. loyal and devotional to the nation. Loyal, devotional to the nation or our nation state. Yes. Okay. Yes, good. Yes, Parth. Yes, ma'am. It is the feeling of loyalty, ma'am, and unity or the patriotism towards the country. So, ma'am, it is called nationalism. Yes, basically, it is an ideology based on the premise that individuals' loyalty and devotion to the nation or nation state surpass other individual or group interests. Okay, it is a feeling that people have of being loyal to and proud of their country, often with the belief that it is better and it is better to be loyal for our own country. It is better and our country is better and more important than other countries. This is nationalism. Okay, good. Okay, so now obviously our country, all people, all the citizens of India, irrespective of their class, caste, color, creed, language or gender, or India was the people, India is a land for those people. Okay, so इसी के साथ में ये अवेयरनेस आई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे लैंड को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, वो हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो बिलीव्स है, उसे रिमूव करने की, उसे हटाने की, उसे एंड करने की कोशिश कर रहे हैं. The consciousness began to be clearly stated by the political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most of these were led by English-educated professionals such as lawyers. The more important ones were the
Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress. Okay, so now after 1850, some of the political organization began to establish, and mostly जो थे उनको लेड कौन कर रहा था, जो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, जो इंग्लिश एजुकेटेड जो लॉयर्स थे, वो उन्हें लेड कर रहे थे. कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन. नाउ नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा. द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ or for all the people, of or for all the people, or sarva means all, janik means of the people. Okay, so sarva means all and janik means of the people, so all of the people. Sarvajanik means all of the people. Though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goal was stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community, or class. They worked with the idea that people should be sovereign. Sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. Now, first of all, what is the meaning of sovereign? Sovereign means, just look at this box, the capacity to act independently without outside interference. Today, India is a sovereign country. So, what is the meaning of sovereign? It is the capacity to act independently. कि आप इंडिपेंडेंटली अपने रीजन के लिए, अपने लैंड के लिए क्या कर सको, डिसीजंस ले सको. जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस अफेयर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या कोई भी फेस कर रहे हो, तो वो आप इंडिपेंडेंट हो, कोई भी आउटसाइड पावर आके या कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. दैट इज सोवरीन. सो दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरीन. मतलब लोगों को एक सोवरीन होना चाहिए, लोगों को ये फीलिंग जो है अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. और ये सोवरीन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ नेशनलिज्म. अगर लोग सोवरीन होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, जो है एक अपने आप को जो है इम्पोर्टेंट पार्ट मान पाएंगे, हम एक प्राइड फील कर पाएंगे. सो इन अदर वर्ड्स, दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स. कि हमारे खुद के जितने भी अफेयर्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, व्हाटएवर द अफेयर्स आर देयर, हमें उनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो हमें खुद को लेने हैं. Okay, so the dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable. Now, obviously, British का जो रूल था, बहुत सा अब इंडियंस धीरे धीरे जानने लग गए थे, वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे. जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, लाइक उन्होंने फार्मिंग रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे लॉज लेकर आए, फॉरेस्ट लॉज लेकर आए, तो ट्राइबल्स की लाइफ इतनी इफेक्ट की. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने किंगडम से रिलेटेड जो है वो लॉज लेकर आए, उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो डिससेटिस्फाइड थे. एजुकेशन एक्ट लेकर आए, ठीक है, वो डिस्पैच आप सबने पढ़ा है. एजुकेशन एक्ट लेकर आए, उससे भी वो बहुत ज्यादा काफी डिससेटिस्फाइड थे. अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश का रूल था,
स्पेशली 1870s और 1880s में हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, और इसी वजह से लोगों का जो क्रिटिसिज्म देखा ना, ऑपोजिशन जब देखा ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने आर्म्स एक्ट जो है वो पास किया। आर्म्स एक्ट में क्या था? डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियंस जो है वो इंडियंस जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपनी खुद की आर्म्स मतलब खुद की मिलिट्री नहीं बना सकते हैं, खुद के वेपन्स नहीं बना सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कि वो अपनी खुद का कोई भी मिलिट्री जो है वो नहीं बना सकते हैं। और उसी टाइम 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मतलब जो ओल्ड और एंशिएंट होता है, स्पेशली लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने पास किया। और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लेके वो क्या था कि जो भी क्रिटिकल है, जो भी गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस कर रहा है, उनको साइलेंट करना। ठीक है, उनको साइलेंट करना इस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसका मेन मोटिव था। इवन उन्होंने कहा था जो कि न्यूज़पेपर्स में या प्रिंटिंग प्रेसेस में आप जो है आप जो भी ऑब्जेक्शनल है, जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है या जो भी ऑब्जेक्शनल है, वो आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है उन्होंने इसके थ्रू, ठीक है, सीज कर दी थी। कन्फेसिकेट द असेट्स ऑफ न्यूज़पेपर, जो भी कन्फेसिकेट का मतलब क्या होता है? सीज करना, टू सीज, ठीक है, टू सीज और टू टेक ओवर करना। जो न्यूज़पेपर के जितने भी असेट्स वगैरह थे, जिनकी उनकी प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह थी, वो ये सारी चीजें उन्होंने सीज कर ली थी। In 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce Albert Bill. Now Albert Bill, the bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitudes of the British in India. So now 1883 में क्या हुआ था? 1883 में एल्बर्ट बिल, इसको एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है। एल्बर्ट बिल जो है वो पास किया था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, नॉट पास, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बिल द इंडियन जजेस टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग द यूरोपियंस, ठीक है, जितने भी यूरोपियंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस है उसको इंडियन जजेस क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी लाने के लिए ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस टाइम पे जो यूरोपियंस थे, उन्होंने, यूरोपियंस जो व्हाइट थे, उन्होंने क्या किया? इसको अपोज किया था। दिस बिल कॉज्ड वाइडस्प्रेड एजिटेशन अमंग्स द यूरोपियन कम्युनिटी। बहुत ज्यादा उनके अंदर डर आ चुका था और यू कैन से कि गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने इस चीज का अपोज किया। दे वेहमेंटली अपोज्ड द बिल एंड फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ इट। गवर्नमेंट को वो बहुत ज्यादा उन्होंने फोर्स किया, वेहमेंट, दे वर सो वेहमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप जो है ये बिल जो है विड्रॉ कर लीजिए। तो दिस कंट्रोवर्सी क्लियरली एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द यूरोपियंस। पर ये जो कंट्रोवर्सी हुई तो इंडियंस ने सोचा ये तो यूरोपियंस का जो एक बोलते ना एक असलियत जो सामने आती है, तो एक असलियत सामने आई। इंडियंस भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश रेशियल जो हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स, जो ब्रिटिशर्स का जो मानना था, ब्रिटिशर्स जो मानते थे ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उस चीज को उन्होंने देखा कि वो हमें इक्वल ट्रीट करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, जिसकी वजह से जो है नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। इस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे और लॉ मेंबर थे लॉर्ड रिपन, और जो
एल्बर्ट ये एल्बर्ट जो थे, लॉर्ड एल्बर्ट जो थे, सर एल्बर्ट जो थे, उन्होंने जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। The need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Albert Bill controversy deepened this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. The early leadership, Dadabhai Naroji, Feroz Shah Mehta, Badruddin Tayyab ji, W.C. Banerjee, Surendra Nath Banerjee, Ramesh Chandra Dutt, S. Subramaniam Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta. Naroji, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalists. A retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various regions together. So, एक बहुत ही एक अर्जेंट नीड जो है नेशनलिस्ट के अंदर जो है कि हमें एक जो है इंस्टीट्यूशन, एक एसोसिएशन हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो उस टाइम पे 72 डेलीगेट्स, ठीक है, पूरे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री 72 डेलीगेट्स जो है 1885 में दिसंबर में बॉम्बे में मिले, और उसको लीड कौन कर रहे थे? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, ये जो कुछ नेम्स अभी हमने देखे, ये सब जो थे लीड कर रहे थे इस एसोसिएशन को, और मोस्टली जितने भी ये लोग थे ये बॉम्बे और कैलकाटा से थे। दादा भाई नारोजी जो थे वो पब्लिसिस्ट थे। नाउ हु इज अ पब्लिसिस्ट? Publicist is someone who publishes an idea by circulating information, writing reports, speaking at meetings. ठीक है, जो पब्लिश करते हैं, जो लॉन्च करते हैं, किसी भी आइडिया को बताते हैं, ठीक है, सर्कुलेट करते हैं, रिपोर्ट्स को लिखते हैं या फिर पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पब्लिसिस्ट। तो लंदन में सेटल्ड थे और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। तो उन्होंने यंगर जितने भी आपके नेशनलिस्ट थे उनको उन्होंने गाइड किया, और ए.ओ. ह्यूमे ने भी इंडियंस को जो है अलग अलग रीजन से इंडियंस को यूनाइट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ए.ओ. ह्यूमे इंडियन नेशनल यूनियन इन्होंने ही फॉर्म की थी 1884 में, और ये ब्रिटिश मेंबर थे। और ब्रिटिश मेंबर जो हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ना, एजुकेशन एक्ट वगैरह आया था, तो उसमें इंडियन सिविल सर्विसेज भी आई थी। तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही वो ब्रिटिश के मेंबर थे, और उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन जो ये दिसंबर में हुई थी उसको बुलाया भी इन्होंने ही था। ठीक है, ये जो 72 मेंबर्स जो डेलीगेट्स थे ना, उनको बुलाया भी इन्होंने ही था। तो 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हुई थी, जो आप अभी देख रहे हो ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन थी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। और इस मीटिंग को और इंडियन नेशनल को फॉर्म किसने किया था, या फिर जो मीटिंग है वो किसने बुलाई थी? ए.ओ. ह्यूमे ने बुलाई थी, ए.ओ. ह्यूमे। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ दादा भाई नारोजी। Naroji's book Poverty and Un-British Rule in India offered a scathing criticism of the economic impact of British rule. दादाभाई नारोजी और उनकी बुक है आपकी Poverty and Un-British Rule in India, एंड इसमें हमें काफी ब्रिटिश रूल के वजह से इकोनॉमिकली हमें कितना कुछ फेस करना पड़ा है, इकोनॉमिकली कितना इम्पैक्ट हुआ है इंडिया, उसके बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, so class, this is all about today. So from tomorrow onwards we will continue this chapter. We will go through other topics of this chapter. Thank you, bye bye, take care.